Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj and Puniji. Welcome to the program. A quick look at the headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stresses on establishing Indian companies as MNCs. Key domestic share indices ended higher today, with the Nifty finishing near the 20,200 mark. And crude oil prices surged to new heights, hit a 10-month high today, embarking on their third consecutive week of gains. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। घरेलू शेयर बाजार में बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक निफ्टी 20,200 के नजदीक बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। लगातार तीसरे सप्ताह इसके मूल्य साप्ताहिक आधार पर बढ़े। Moving on to our first story of the day, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today stressed on establishing Indian companies as multinational corporations, MNCs. Addressing the Global Services Export Conclave in New Delhi, the minister said that free trade agreements are also meant for engaging with the world, and he further assured facilitating and ensuring more opportunities. Mr. Goyal also highlighted that over 50% of the country's economy is coming out of the services. He added, services export also showed a 55% growth in the last 2 years. पुनीत जी, चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि दुनिया का जो उद्योग जगत है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है और जो कह लें कि नया आह्वान किया है हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी ने कि भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां के रूप में स्थापित हों, उसके कैसे अवसर हमारे लिए निकल रहे हैं वैश्विक व्यवस्था में? तो मनोज जी, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भारतीय इंडस्ट्री जो है वो किस प्रकार से इवॉल्व कर रही है। देखिए, अभी तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रायोरिटी थी इंडस्ट्री की, वो थी डोमेस्टिक डिमांड को मीट करना। तो हम इंपोर्ट करते थे या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके भारत में ही हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे और जिससे कि जो डोमेस्टिक नीड है उसको हम मीट कर सकें। लेकिन अगर आप देखें तो जो अब सरकार की जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है इंडस्ट्री के लिए, वो है कि हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भारत उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बने। कुछ हद तक मैं कहूंगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना अब उसमें पिछड़ रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। चाइना की इकोनॉमी को या चाइना के सिस्टम को विश्व के जो व्यापारी हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि चाइना के साथ दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा हो। तो मुझे लगता है जो अगर भारत को एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है तो भारतीय कंपनियों को भी ग्लोबल लेवल पर सोचना होगा। इसलिए हमें मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशंस का आह्वान जो किया है, मुझे लगता है वो एक डायरेक्शन है टू दिस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वी बिकम अ बिग पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे पुनीत जी कि हमारी कुछ कंपनियां, जैसे कह लें कि नाम हम आम तौर पर नहीं लेते, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनके कारोबार दुनिया भर में चल रहे हैं और भारत से बाहर निकलकर भी उनके कदम पहुंचे हैं कई देशों में, कुछ महादेशों में। तो क्या हम उसी को आगे बढ़ाने की सोच रहे, या जो कोविड के बाद कह लें कि एक नया अवसर बना है दुनिया की, जो कारोबारी दुनिया है उसमें, कि चाइना +1 यानी 1+1 की जो नीति है उसके तहत हम अवसर को तलाश रहे हैं? तो मनोज जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रेज किया कि भारत ने जो अपनी जगह बनाई पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 वर्षों में, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में ज्यादातर अगर आप देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स जो है हमारे, वो बहुत स्ट्रांग भारत के एक पोजीशन है ग्लोबल सिस्टम में, ग्लोबल ट्रेड में। और हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट को, और वाणिज्य मंत्री ने भी इसको काफी अंडरलाइन किया पॉइंट को, कि हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा, और ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया इस बात का, कि भारत के जो आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं इस वर्ष करीब $350 बिलियन से ज्यादा हम आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करेंगे। और सऊदी अरेबिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है टोटल, वो भी $350 बिलियन है। यानी सऊदी अरेबिया जितना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, उससे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं भारत आज। तो हमारी ये स्थिति आज विश्व के बाजार में बनी। लेकिन जो एक बहुत वीक, मैं कहूंगा, एक एरिया रहा इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, वो रहा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का। हम मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछड़े रहे, वहां पर हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, हम ज्यादातर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कोविड के बाद जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली पूरे विश्व के बाजारों में, आपने जिक्र किया चाइना +1 या 1+1 मैन्युफैक्चरिंग बेस का, इसको ग्लोबल सप्लाई चेन एक में भी फर्क कह सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह बनाए विश्व की अर्थव्यवस्था में, वो एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा ने भी कहा अभी रिसेंटली कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए अगले 4 या 5 वर्षों में। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने देखे हैं, बड़े सुधार, बहुत अच्छे सुधार हुए हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग में अब हम ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना पाए। Puniji, the point about, 55% of our exports today, service exports is what the component and the composition is. And that's very well taken. And the fact that you're stressing that manufacturing exports is also a critical area of concern and we need to focus on that. What do you think in your idea is maybe a balance of what percentage should be in manufacturing and services? Because the world is changing and how we are seeing GDPs, that's also the proportions and the composition is changing. So agriculture exports, manufacturing and services, what do you think would be a good balance keeping India's local polity and population in mind? So Gaura, see, primarily our inherent strength is, like the Prime Minister often said, soft skills and that soft power. So I think IT exports or knowledge exports or services exports, as you call them, I think they will continue to be the bulwark of our economic growth across the world, because that is where India has a strategic advantage. So I think we have a natural advantage there. We will continue to grow that in a big way. Of course, agricultural exports are not that big. We are in fact trying to create some areas of strength there. We have tried to do a lot of exports in terms of handicrafts, in terms of other skills, but they can't be large in volume. So I think if we need to really grow the pie that we have in terms of exports, services we are doing well, I think we will continue to do well in that area. If we want to create a greater space for India in the global supply chains, again, I'm emphasizing that, then it has to be manufacturing. So until now, like I said, our entire effort was focused on meeting our own requirements, domestic requirements of products. But the very fact that now the world is looking at India as a technologically advanced nation and as an advanced economy, I think we have that opportunity. They are willing to trust Indian manufacturing. That's one. Secondly, I think one of the other very important areas that I must highlight is the fact that in last 7-8 years, we have seen huge infrastructure development in India. See, whenever we talk about manufacturing, it's a very physical exercise. And while all the time we spoke about manufacturing, the need to push manufacturing, the truth is that we did not have the infrastructure, we did not have the roads, the ports, the airports, the
electricity. No, I mean, this whole thing, you need this entire physical infrastructure to push manufacturing. Fortunately, in the last 7-8 years, we've seen enormous development in infrastructure, which has then created this opportunity for us. Right. पुनीत जी, आपने चर्चा की निर्यात संबंधी, तो कुछ निर्यात संबंधी ताजा आंकड़े आए हैं। उन आंकड़ों की ओर हम आपकी भी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। पहले श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि ताजा आंकड़े क्या आए हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर अगस्त तक इस वर्ष कुल मिलाकर व्यापार घाटा 37.85% रहने का अनुमान है। वाणिज्यिक कारोबार घाटा इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में घटा है, उल्लेखनीय ढंग से घटा है, और यह 98 अरब 88 करोड़ डॉलर के आसपास रहने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 112 अरब 85 करोड़ डॉलर के आसपास रहा था। कुल मिलाकर जो कृषि क्षेत्र का है, वहां भी उल्लेखनीय प्रदर्शन निर्यात में दिखा है। ऑयल मिल्स में 57% से अधिक, तंबाकू 20% से अधिक, तिलहन 17% से अधिक, मांस और डेयरी उत्पाद में 16% से अधिक, काजू के निर्यात में 14% से अधिक की वृद्धि हुई है। फल और सब्जियां भी 14% से अधिक बढ़ी हैं। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन हमने किया है निर्यात के मोर्चे पर, और जो कुल मिलाकर हमारा व्यापार घाटा है वो घटा है पिछले वर्ष की तुलना में। किन अर्थों में ले हम इस आंकड़े को, पुनीत जी? तो मनोज जी, जैसा आपने कहा कि काफी एरियाज हैं हमारे ट्रेड में जहां पर हमने काफी ग्रोथ करी है, वहां पर नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने क्रिएट हो रही है। आंकड़े आपके सामने हैं, और करीब ट्रेड डेफिसिट जो है करीब $24 बिलियन का है भारत का, पर इस पिछले महीने का। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम यहाँ पर और ग्रोथ कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे, इसका ब्रेकअप देखेंगे, तो जो सबसे बड़ा हमारी कमजोरी है वो हमारी डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। और आप जानते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और भारत बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जो क्रूड ऑयल का जो डेफिसिट आता है हमारे ट्रेड बैलेंस में, वो बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से जो भी हम ट्रेड डेफिसिट देखते हैं वो ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से रहता है। तो मुझे लगता है कि हम अभी ट्रेड बैलेंस को हम बढ़ा सकते हैं। वाणिज्य मंत्री ने भी ये बात कही कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, FTAs जो हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ट्रेड को बूस्ट करने में। लेकिन जो भारत ने बहुत पहले जो FTAs किए थे वो भारत के फेवर में नहीं थे, और मुझे लगता है पूरे नए जो बातचीत चल रही है, इंग्लैंड से बातचीत, यूके से बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, दूसरे देशों से बातचीत चल रही है, यूरोप से बातचीत चल रही है। मुझे लगता है आने वाले कुछ वर्षों में उसका फायदा हमें होगा, तो हमारा ट्रेड फिगर्स इससे भी बेहतर होंगी। Puniji, you mentioned oil prices, so we'll just take that story and then would want to get an understanding of its impact on the trade deficit once again from you. Crude oil prices surged to new heights and hit a 10-month high today, embarking on their third consecutive week of gains. Prices increased as much as 3% in this week alone, and the upward trend is translated into a 15% boost in oil prices in the month of August and a significant 13% year-to-date rise. The surge came after China cut the bank cash reserve requirements by 25 basis points to boost its economic recovery and potentially increase oil demand. Another significant driver behind this rally has been the recent strong buying activity from hedge funds over the past 2 weeks due to tight supply. In intraday trade, Brent crude was trading at $94.10 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $90.60 per barrel when reports last came in. Punichi, you had said that, and you had actually also remarked on the, fairly fast rate at which oil prices are increasing. But when we talk of a projected trade deficit, the improvement in that, are we considering these potential increase in prices, or what is it based on? So basically, like I said, our basic Achilles heel in terms of trade is oil. We run a trade deficit approximately of $150 billion on account of oil alone, out of our total trade deficit of about approximately $200 billion. Balance of payment, fortunately, is positive. So oil is our biggest problem, and the only way to get out of that logjam really is
to transform our economy from oil dependence to either green hydrogen or ethanol-based fuels or solar energy. We really need to move away from oil dependence. And that is, and if you look at the policies being followed by the government, the entire boost being given to the green hydrogen mission, the entire boost being given to solar energy, wind energy. My own take is that in next 5 to 6 years, our consumption of oil will decline. And that is one of the basic premises I have in terms of saying that we will be able to bring a trade deficit under control, which will stabilize our currency and give economic boost. So I think this energy dependence, we have everything else which is in place. I think India is in the right place at the right time. But this huge dependence on oil is the only thing which is dragging us down. If we can find a way around it, and in the next 5-7 years, maybe we can do it, then I think there's nothing stopping us. So the targets you mentioned, Punitji, 5 years or so, and I think very, very optimistic and heartening to know that India would be ready in the next 5 to 10 years to transition, because it would require, change in infrastructure, change in so many ways, change in our machinery, change in our equipment, because you're right, this is the only way to go, and this is the only way for us to actually move towards greater energy self-sufficiency. So, Gaura, interestingly, so we are now trying to tackle this issue on multiple levels. So at one level, we are pushing solar energy. In fact, if you look at the fresh investments being made in the energy sector, bulk of the investments are now being made in the wind and solar energy sectors. So we are no longer putting up more coal-based power plants. We are saying, diesel-based power plants. We are all saying that we are going towards wind energy or solar energy or green hydrogen. So I think that directionally we are moving in that place. Secondly, I think the whole transition to the electric vehicle ecosystem is much faster than we anticipated. Earlier, there were expectations that we'll probably be 5 to 10% replacing our new demand of automobiles by electric vehicles. But I think that transition is happening much faster than anticipated. And again, we expect that almost 50% of India's fleet in 10 years will be electric vehicle fleet. And because the price is also coming down very rapidly. Right. So all these things I think will add up to this transition from oil to green energy. Right. श्रोताओं, कहा जाता है तेल देखो, तेल की धार देखो, यहाँ हम कहते हैं कि तेल के दाम देखो। श्रोताओं, पुनीत जी, हम सीधा तेल की जो वर्तमान स्थितियां हैं, न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में, उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि तेल के दाम बढ़ना भारत के नजरिए से निश्चित रूप से चिंता की बात है, लेकिन क्या तेल के दाम बढ़ना जो अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमापन था, उसके तेज होने के संकेत दे रहा, या जो उत्पादन में कटौती हुई है उसका परिणाम है? तो मनोज जी, आपने सही कहा। ये एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ये प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। ये तो साफ है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस यानी ओपेक और रशिया, उन्होंने करीब 3 मिलियन बैरल्स पर डे, 30 लाख बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन की कटौती की है पिछले दिनों, और वो प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं या प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय कटिंग सप्लाई। तो एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अरसे तक ये चल नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अगले 6 महीने या साल भर ये एक चैलेंज जरूर रहेगा, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेंगे और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ना सिर्फ हमारी, सारी विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी नेगेटिव असर पड़ता है। और आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑयल प्राइसेस से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो प्रोडक्शन कट जो है वो मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद उसको दे शुड टेक अ बेटर व्यू ऑफ दैट। So, Punitji, you feel that India has the sustaining power or the staying power to weather this volatility and not let it affect our growth too much? So, fortunately, see, usually I would say that this is such a big drain on resources that any country would really be hurt. So, India can take it because we have $600 billion of foreign exchange reserves. So, as far as money is concerned, we have the money power. It's not that India cannot afford it, fortunately. Unlike many smaller countries, I think India will do well, but many smaller economies will not be able to sustain this kind of oil prices. And you will see another round of crisis in small economies maybe next year. However, the truth is that if we spend $150 to $200 billion every year on importing oil,
that drains our energy, that drains our resources to grow. We could put that money in infrastructure, we could put that money in boosting our own domestic employment. But unfortunately, if we are just importing oil with that, then it does reduce our ability to grow strongly. So I think it really takes away. High oil prices really hurt us in terms of employment, in terms of economic growth, in almost all aspects. आइए अब चलें खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, नजर डालें शेयर बाजार पर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला आज भी चलता रहा। प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 20,200 के नजदीक पहुंच गया। बाजार में इस तेजी के पीछे और निफ्टी की नई ऊंचाई तक पहुंचने में देश में घटती मुद्रास्फीति, उसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तर पर वृहत आर्थिक पैमाने और कॉरपोरेट जगत को हो रही अच्छी आमदनी का मिलाजुला हाथ बताया जा रहा है। इन सब खबरों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 319 अंक यानी 0.47% की बढ़त लेकर 67,838 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंक यानी 0.44% बढ़कर 20,192 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.9%, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.27% लाभ में रहे। The key domestic share indices ended higher today, with the Nifty finishing near the 20,200 mark. The Nifty's journey to new highs, crossing the 20,100 level, was led by a favorable blend of healthy macro, moderating inflation, and solid growth in corporate earnings. The BSE Sensex rose 319 points, or 0.47%, to finish at 67,838. The NSE Nifty also advanced 89 points, or 0.44%, to settle at 20,192. In the broader market at the BSE, the mid-cap index accelerated 0.09% and the small-cap index rose 0.27%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies appreciated, while the rest 10 declined. Bharti Airtel gained 2.3%, Mahindra & Mahindra rose 2.2%, and HCL Tech advanced 1.6%. On the other hand, Asian Paints declined 1.3%, Hindustan Lever slumped 1.2%, and Bajaj Finance fell 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 11 sectors gained, while 9 logged losses. The telecom sector was a top gainer as it surged 1.6%, followed by auto, which added 1.4%, and IT advanced 0.7%. On the other side, realty declined 0.5%, power index and industrial sector both fell 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 1,932 companies appreciated and 1,701 companies declined. A total of 153 shares remained unchanged. Punichi, well, we're seeing that the markets have steadily been strong over the past few days, except I think one day, which was a big hiccup. What do you think in terms of sectoral indices? Is there a pattern, or by and large, in some increase on one particular day and the others take a lift on the other day? As far as markets are concerned, of course, we are establishing new records every day, which is very, very heartening for investors, I think. But at the same time, and just to point out, today was the 11th day in a row when the headline indices they rose, and this is a record after 2007. In October 2007 was the last when we had such a long winning streak. And so after almost 16 years, we have seen this kind of a rise in 10, 11 days in the index. Right. So that gives you a sense of where we are headed as far as markets are concerned and the kind of mood of euphoria which is there. But at the same time, I think we need to, while I'm very happy about it because it shows the strength of the Indian economy, but I think there are pockets of overvaluation in this market, where there has been some profit booking and there is no euphoria going forward. So clearly, some of the areas, however, are doing very well. For example, PSU stocks, which have not done well in the last many years, in 10, 15 years. The public sector stocks, they have done very well and given very good returns, very handsome returns to investors. Similarly, public sector banks have done very well. So I think there are areas of some excesses and some areas the rise is justified. It's a mixed bag. I think investors should just enjoy it as it goes.
But at the same time, I think it will be prudent to book some profits, be cautious, and be prepared for ups and downs in the market. श्रोताओं, आपको बिल्कुल संक्षेप में सारी आवश्यक जानकारियां मिल गई। हमारे जो नियमित श्रोता हैं उनके लिए संदेश किया कि किस रूप में इस उठे हुए बाजार में, उच्चतम स्तर पर बाजार में आप अपने निवेश की आदत को रखें, कुछ मुनाफा भी बुक करें और जहां उचित लगे वहां निवेश भी करते रहें। आइए चलें खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 83 रुपये 18 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 105.2 पर चल रहा था। और अब वैश्विक बाजारों की ओर चलते हैं। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां चीन को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में लिवाली तेज रही। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्की 225 दोनों सूचकांक 1.1% लाभ में रहे। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% ऊपर आ गया। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.7% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% नीचे आ गया। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.9%, जर्मनी का डेक्स 1% और फ्रांस का कैक 40 भी 1.6% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। Wall Street ended higher on economic data. The S&P 500 ended higher yesterday as hotter than expected economic data eased worries about a recession without raising fears of a Federal Reserve rate hike next week. The Nasdaq Composite Index and the S&P 500 both added 0.8%, whereas the Dow Jones Industrial Average gained 1%. Looking at the markets globally, Punichi, do you think across the world investors are breathing easier, more steady, more focused, and less jittery? Yes, of course. I think the fear of the fact that there will be a global recession, I think that has receded a lot. Central banks are easing up on the interest rate hikes. I think to that extent the fears are receding, and investors are more hopeful of a soft landing, and that's why the markets are doing much better. यहां पर हम यूरोपीय अर्थव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और कुल मिलाकर समझना चाहेंगे कि यूरोप यूरोजोन के रूप में किस दिशा में जाता नजर आ रहा। देखिए, यूरोप के साथ काफी चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर स्लो डाउन कर रही है, इन्फ्लेशन हाई है और इंटरेस्ट रेट्स वहां पर काफी बढ़े हैं। हालांकि और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया वहां पर। हालांकि अब उम्मीद है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है यूरोप के लिए काफी चैलेंजेस हैं। अभी पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म होना होगा, टाइम लगेगा वहां। आइए चलते हैं सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में ध्यान दें तो आज सोने और चांदी के मूल्यों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 240 रुपये बढ़कर 58,803 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। उधर दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1,285 रुपये उछलकर 72,265 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना थोड़ा सा बढ़कर $1,938.70 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी मजबूती के साथ $23.40 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। पुनीत जी, यहां पर हम बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे कि सोना आने वाले दिनों में इसके कैसे रहने के आसार हैं। देखिए मनोज जी, डॉलर इंडेक्स है वो करीब 105 और 106 के बीच में चल रहा है। यदि यहाँ से डॉलर इंडेक्स में और मजबूती आती है तो मुझे लगता है कि सोने की कीमतें कम आएंगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर स्टेबल रहेगा ज्यादातर, पर डॉलर इंडेक्स बढ़ने की एक आशंका है। उस केस में गोल्ड में थोड़ी प्राइसेस कम आ सकते हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you, Puneet ji, for joining us on our program. And now, before we close, a quick look at the headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stresses on establishing Indian companies as MNCs. Key domestic share indices ended higher today, with the Nifty finishing near the 20,200 mark. And crude oil prices surged to new heights, hit a 10-month high today, embarking on their third consecutive week of gains. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra.